अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन विद लाइट. It is the scientific measurement technique. It measure light that is emitted, absorbed or scattered by material. असल में जो मटेरियल से लाइट एमिट या एब्जॉर्ब होती है उसको मेजर करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल लाइट बाय मॉलिक्यूल्स कॉजिंग द promotion of electron from a ground electronic state. Next है applications of microbiology. In general, microbiology की जो definition है वो the branch of science which deals with the study of microorganisms. मतलब कि हम microorganisms को study करते हैं in microbiology में. UV visible is used to determine the structure, size, shape of the microorganism found in the given sample of spectrometry. It is also used to determine the spectra change during growth of microorganism. Application in pharmaceutical मतलब कि drugs वगैरह में pharmaceutical companies are able to use UV method for structure determination of different drugs, and law enforcement agencies are able to use similar method for the detection of drugs in evidence sample. It is used to determine the purity of aspirin tablet for which the active ingredients is acetyl salicylic acid. नेक्स्ट है क्वालिटेटिव। पहले हमने क्वांटिटेटिव पढ़ा, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी थ्रू द सिंपल प्रोसेस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रो मतलब कि स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिंपल प्रोसेस से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए। एनालिसिस ऑफ क्रोमोफोर्स इन फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स। मैनी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स contain chromophores that make them suitable for analysis of UV visible absorption. Products that have been analyzed in the fusion include antibiotics, hormones, vitamins, and analgesics. Next, detection of impurities. UV visible spectroscopy is one of the best methods for the determination of impurities in organic compounds. Detection of functional group. This technique is used to detect the presence or absence of functional group in compounds. Identification of unknown compounds. And unknown compounds can be identified by UV visible spectroscopy. The spectrum of unknown compound is compared with spectrum of reference compound. मतलब कि हम कैसे कर सकते हैं UV visible को यूज़ करके unknown compounds की identification. The spectrum of unknown compound is compared with the spectrum of reference compound, and if both spectrum confirm then identification of unknown substance. मतलब कि अगर both spectrum confirm हो जाए तो unknown substance की identification हो जाएगी. Application of in clinical studies मतलब कि मेडिसिन्स में हम कैसे यूज़ करते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल सैंपल. इट इज़ आल्सो यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर साइज एंड नंबर ऑफ lymph nodes. In clinical study, we also study the enzyme kinetics. We know enzymes catalyze the reaction, and we cannot study the reaction without UV visible spectroscopy. Identify the molecular weight of particular sample such amine and ketone compound. तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.